Okay, let's start everyone. Today we are going to do one of the easier chapters. That's ATA chapter 35, oxygen systems. Let's start. I want all of you to open your FCOMs and go to DSC systems, chapter 20, 35. That's oxygen. Let's have a look at the outlines. Is everyone there? Great. Let's have a look at oxygen systems. Under oxygen, we have 35, 10, 20, 30, 40. 10 talks about basically the general description, right? And 20, 30, 40 are the subparts. Let's go to general first and let's go to the description. See, the general section tells you this. The oxygen system consists of systems which are inside the cockpit, inside the cabin. In the cockpit, you have fixed oxygen system. You have a fixed oxygen system. This is primarily used by the flight crew, pilots, and the observer seats to safeguard themselves from smoke, noxious gases, and but obviously depressurization. Okay. However, we also have fixed oxygen systems in the cabin. They are for the crew as well as for the passengers, and they are primarily to be used for the purpose of depressurization. This has these fixed oxygen systems will not save them from smoke and noxious gases. Why so? These oxygen systems are developed or they produce oxygen. They generate oxygen. They do not store oxygen and provide it to the crew. In fact, they generate oxygen. They rely on chemical oxygen generators. However, these oxygen for the flight crew is from stored oxygen in the oxygen bottles. And it's a pressurized oxygen from the cylinders. Hence, because it is pressurized oxygen, you can wear a mask which will completely cover your eyes, seal your nose, seal your mouth, and you can directly breathe. Okay? But this is not so for the case of passengers and crew. If there is actually smoke in the cabin, then you, in fact, should not be using that mask because you'll be breathing more of the smoke and more. Okay? Lastly, in the cabin, you have portable oxygen. Not only this, sometimes in the cockpit also you have portable oxygen. But for the sake of simplicity for teaching you, I have made a note here uh, under the cabin, okay? Because I also personally, in my line flying experience, I have not really seen portable oxygen cylinders inside the cockpit. This is primarily for two things. This can serve as crew for the purpose of protection. Okay. Basically, a crew can get a mask, take a mask, connect it to this oxygen cylinder, and maybe when they are firefighting or probably when they are finding their way through smoke, or let's say there's a lot of turbulence, there's hypoxia. You know what you're actually supposed to do when there's depressurization and you cannot actually get down to 10,000 feet because of mountains below. Crew are actually supposed to get up, take this portable oxygen bottles out, wear it, sling that bottle across their back, hold it, and then reach out down the aisle to help anyone who's in need. So this is for the crew's protection. Sometimes when the passenger falls sick, then this portable oxygen can also be used to give him first aid. 90% of the problems in flying can be solved by giving a person oxygen. At least this is what I have seen. Be it fits, be it seizures, be it anything. दो तीन चीजें, ब्रीदिंग सही कर लो और उसको कुछ मीठा खिला दो, ओआरएस पिला दो, आज से उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सही हो जाती है. Okay. So we have basically these three systems. You can also go through the FCOM in the description section. यही चीज लिखी हुई है. Please have a look. Perfect. Now let's have a look at the description for the first system, which is the fixed oxygen systems inside the flight deck. That is 35-20.
fixed oxygen system for the cockpit. Let's go there. You can follow it with the FCOM. I will teach you from my notes. Uh, in your FCOMs, you will probably see a number of different MSNs, if I'm right. दो तीन similar articles दिख रहे होंगे, general के दो articles दिख रहे होंगे, if I'm right. So I'm going to teach you and highlight the differences as well. One of them is for the COs, the current engine option aircrafts. One of them is for the MEOs. Please have a look at the schematics below. Firstly, I'm going to teach you the COs because this is exactly what you will be required to study for your exams. So we have the entire aircraft. Yes. Talking about fixed oxygen systems in the cockpit, we have COs and NEOs. We have differences between the both of them. Okay. Now, in the COs, in the fuselage, on the left hand side, there is an oxygen bottle which is stored. Where is it stored? It's actually there in the avionics bay. You can access the oxygen bottle from the avionics bay. It's a high pressure cylinder. Oxygen is stored at what pressure? 1800 psi. 1800 psi. It's on the left hand lower fuselage, very close to the avionics bay, in fact, inside it. Now, it is connected via a pipe, where this pipe actually goes all the way to the left hand side of the fuselage, where this pipe goes to the left hand side of the fuselage and discharges any buildup, discharges any buildup of excess pressure of oxygen. Okay, so it has an overpressure disc, which is an indicator कि भाई ऑक्सीजन ओवर प्रेशर की वजह से डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं. We'll go about this in some time. Lastly, on the oxygen bottle itself, we have a pressure regulator on the cylinder itself, which discharges oxygen at a very known pressure. So basically, pressure reducing valve कह लो आप. We also have a solenoid valve जो कंट्रोल करता है कि यार ऑक्सीजन कट ऑफ कर दें, हम लोग उसको पूरा शट ऑफ करवा दें. कब काम होगा, कब रिक्वायर्ड होगा ये? When you are in cockpit preparation or preliminary in cockpit preparation, you are required to turn all the lights to auto position, lights out position, right? इसमें आप crew oxygen masks को भी off position पे रहता है, आप उसको on करते हो. So when you're basically securing the aircraft, you do not want the oxygen cylinders to be continuously connected to the oxygen mask. There can be some minor leak here and there which can deplete the oxygen. Why do you want to waste it? So there is a panel above using which you can shut it off. Lastly, this same one oxygen cylinder can be connected to 3 or 4 masks. Let's have a look at the diagram. This is a black and white diagram for the COs. Neo aircrafts have a bigger, better diagram. Here we have an oxygen cylinder, as you can see. This oxygen cylinder is connected to a manual isolation valve. So if you basically turn this valve, the entire oxygen cylinder is isolated from everything. When you screw this knob in, basically oxygen does not flow over here. That's the funda. If you screw it in, you can isolate it. On that oxygen cylinder itself, you have a direct pressure reading gauge. This pressure reading gauge does not have anything to do with the ECAM pressure that you see. That is coming from the PRV. This is a direct pressure reading gauge. जैसे fire extinguisher के ऊपर एक pressure gauge रहता है, exactly like that. Okay. I just have one question. Check for lag in between the screen and my voice. 1, 2, 3, 4, 5. There's no lag. Perfect. Now you have an overpressure duct over here. You have an overpressure duct over here. Air is going through this pressure regulator. दोनों जगहों पे, डायरेक्ट सिलेंडर पे और प्रेशर रेगुलेटर दोनों पे, we have an overpressure discharge hose which is discharging any sort of an overpressure with the help of a safety port. When this actually gets discharged, there is a disc which is green in color which gets burst, okay. अब यहाँ से प्रेशर जाएगा, प्रेशर रेगुलेट हो जाएगा. नाउ ये प्रेशर जो है यहाँ पे जो मुझे प्रेशर मिलता है, ये प्रेशर में ई कैम को भी फीड करता हूँ, ये प्रेशर में ई कैम को भी फीड करता हूँ. तो when I am
doing my before walk around flows. What are my before walk around flows? Door page, what do you check? Check the oxygen pressure. Hydraulic page, hydraulic quantity, and you check the engine oil quantity. How much engine oil quantity should it be there? In green, no, 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 no. Do you know your FCOM limitations for engine oil quantity? Limitations पढ़ा है? I've sent it in the group, right? I want it done today, boys. Those are a very good set of notes. Do not miss them. Ask any of your friends ऐसे notes कहीं नहीं है. Anyways, going forward, यहाँ से आपका oxygen pressure इधर आ रहा है, and you have a solenoid valve here. This solenoid valve, basically it's a cutoff valve. It can cut off the hydraulic supply to any of the mask, and this particular valve is controlled from overhead panel. On the overhead panel, this is on the left hand side. This is on the left hand side of the overhead panel. There is this screw supply button. When you put, जब आप इसको दबाते हैं, यहाँ पे नीचे ऑफ लाइट हो जाती है. You press it again, this entire thing will become black and blank, and this thing will open. When you press it again, वो off हो जाएगा, valve बंद हो जाएगी. But when the oxygen is being supplied, when you're in your cockpit preparation flows, when you're turning that button on, this particular valve will open. Supply the pressure to the distribution manifold. Why distribution manifold? Because there are four. Three तो minimum है ही है, but there are four. There can be four. So this is basically distributing the pressure to the all the hoses, the जो आपके ऑक्सीजन मास्क में जो पाइप जाती है ना, बेसिकली वो पाइप तक ये प्रेशर पहुंचाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला. So this is those pipes which are going to the masks. On the mask, you do a oxygen fire test. My apologies. You do an oxygen mask operation test. ये वो box है, storage box. ठीक है? कोई doubt? So now you know this diagram as well. Now you know the diagram as well. Now, distribution manifold, this entire portion is known as the low pressure circuit. Can you see this? This entire area is known as the low pressure circuit. This is known as the high pressure circuit. यहाँ पर अगर कहीं पे भी ये लो प्रेशर सर्किट पे अगर कहीं पे भी प्रेशर 50 psi से कम हो गया कभी भी, तो यहाँ पे रेगुलेटर लो प्रेशर आएगा ECAM के साथ. Let's have a look at how are things different in the neo aircrafts. How are things different in the neo aircrafts? Pay attention. In the neo aircrafts, you have two cylinders instead of one. So it's basically divided into two subsystems. One is for the left side, one is for the right side. So one for the right side is for the first officer and the fourth occupant. One for the captain and for the third occupant. Clear? Instead of having one safety port, you have two safety ports and an overpressure discharge disc. ये ना आपके फ्यूजलाज के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहता है वो ऑक्सीजन डिस्चार्ज इंडिकेटर. तो आप ना वॉक अराउंड में चेक करते हो कि ये ग्रीन डिस्क विजिबल होनी चाहिए. अगर ये ग्रीन डिस्क विजिबल नहीं है या ये फट चुकी है मतलब that oxygen has been discharged due to thermal expansion and overpressure. Because there are two oxygen cylinders, each of the oxygen cylinder has a pressure regulator. So there are two pressure regulators and you have two solenoid valves. There can be up to 3 or 4 masks. Again, let's have a look. Instead of having one, you have two cylinders and you have a direct pressure reading gauge. Again, you have an onboard discharge indicator. You have an overboard discharge indicator which works in the same way. You have a pressure regulator. You have a pressure regulator. This pressure regulator is again sending the value to the exact same thing that we have studied, which is the exact same thing that we have studied. Clear? उसके बाद ये वापस एक शट ऑफ वाल्व में जाएगा, एक सोलेनॉइड वाल्व पे जाएगा एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व में जाएगा. ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से राइट वाला राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जाएगा. इतना ही आसान है.
This is the schematic for the flight crew oxygen mask. Now, how do you operate the mask? Have you all in your type rating been shown how do you operate the mask? Have you actually worn it? Resuming. So, how many of you in your type rating have been actually, you have donned the mask and you have seen how to use it? करवाया सबको अच्छे से करवाया चलो that is very good that you have actually been shown how to use it. That is exactly how type rating should be done. So I will also brief you on how do you operate the mask. When you open the lid, when you open the lid, this is exactly what you see. Over here you have a blinker. ये actually blinker नहीं है, this is a rubber kind of a thing only. आपने अगर उसको देखा हो तो ये चार पीसेस जो आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज रबर, कटा हुआ रबर है. और इसके अंदर जो आप येलो ब्लिंकर देख रहे हो ये भी एक रबर ही है जो उसके ऊपर ऐसे बाहर निकल के आती है बिकॉज वो बलून की तरह फूलता है. ओके, दीज आर टू फ्लैप्स और इस फ्लैप के अंदर आपका ऑक्सीजन मास्क है along with a very big harness. Along with a very big harness, there is a proper way to store the harness as well. Clear? Now this is a blinker. जैसे जैसे ये जब भी आपका ऑक्सीजन फ्लो होता है, आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन फ्लो होता है, ये ब्लिंकर चलेगा. So when you take a deep breath, when you take a deep breath, blinker will come on. When you release it, blinker will go. When you again take a deep breath, because normally जब आप ऑक्सीजन मास्क को डाउन करते हो तो वो कैसे चलता है, वो डिमांड पे चलता है, ऑन डिमांड. इट विल ओनली सप्लाई ऑक्सीजन व्हेन you suck in air with your nose. Clear? Now, then we have the reset push button. When you press the reset push button, it checks a lot of things. It checks the blinker, the flow, the regulator supply, any seal problems which is downstream of the valve, checks for a number of things. ठीक है, वो उस मास्क को चेक करता है. Now let's say you have used the mask. When you use the mask, or basically when as soon as you take the lid out, जब ये lid खुल जाता है, याद रखना जैसे ही lid खोलेगा ना, ऑक्सीजन सप्लाई टू द मास्क इज कनेक्टेड एंड यहाँ पे ऑक्सी ऑन करके एक फ्लैग आएगा. किस कलर में आएगा ये आप लोग मुझे देख के बताओगे, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है बिकॉज आपके एफकॉम में कलर डायग्राम नहीं था. बट यू विल टेल मी, दैट्स योर होमवर्क टू फाइंड आउट कि ये जो फ्लैग आएगा ये कौन से कलर में आएगा. ओके, when you have used it and you again store the mask, then you have to reset the system. So then what you do is you press this particular thing, the press to reset button. So it's a bifunctional button. It can be used for testing, it can also be used for resetting. When you reset it, what it does is cuts off the oxygen supply. Point number one, biggest thing. Also the mask has a microphone built into it somewhere. I'll show you where the microphone is. And that particular flag that we have, the oxygen on flag that we had, it also disappears. So when you don the oxygen mask, what are you supposed to do? You're first supposed to take out your headsets, wear the mask, put your headsets on, infrared switch to enter, loudspeaker volume minimum. Clear? Lastly, over here, can we see other things as well? Yes. Here we have the emergency pressure regulator. Here we have two holders, and here we have the dilutor demand type of system. This particular pipeline that you see, this pipeline is nothing but the oxygen supply hose that is coming straight away from our system that we studied over here. Is this. Now, let's have a look at this mask in further detail. As you can see this is the low pressure regulator inside the mask. This is the low pressure regulator inside the mask. It has three buttons, one, two, and this thing. Let's talk about the first clapper button, like clip on button. ठीक है, ये जो grip है, red grips है, this and this. Now in this particular grip on the left hand side is fixed. This particular grip on the left hand side is fixed. The right hand side you can actually press it. आपने देखा होगा वो दबता है लेकिन एक ही साइड से दबता है. जब आप उसको दबाते हो तब क्या होगा, राइट वाला स्लाइड करता है, इट अनलॉक्स द टू फ्लैप्स. ये जो दो फ्लैप्स है
ये और ये इनको अनलॉक कर देगा एंड ऑक्सीजन भेजता है टू इन्फ्लेट दी हार्नेस। एंड वो जो माइक है, जैसे आप उसको निकालोगे माइक भी कनेक्ट हो जाता है। हाउ आर यू सपोज टू वेयर इट? व्हेन यू प्रेस इट, the same oxygen which you used to breathe is now used to inflate the harness. How do you wear it? You ऐसे पहनते हैं या फिर ऐसे पहनते हैं? Back of the head first, then you wear it like this, and then you release it. When you release it, then that elastic thing, this elastic thing again tightens up. एक बार में नहीं होगा, वापस प्रेस करके छोड़ दो. What will happen if you're breathing too heavily and you are also in a panic mode? The entire screen in front of you will get foggy. What do you do? Then in that case, you have to use the emergency pressure system. If there is smoke, again you will use the emergency pressure system. Before you use the emergency pressure system, there's something that I need to tell you, which is about this particular button. This is N and this is 100%. Where should this particular thing be in your cockpit preparation flows? How to test the mask आप करते हो ना? Where should this thing be? ये basically एक ना स्विच है जिसको आप नीचे दबा सकते हो. नीचे दबाओगे तो ऐसे हो जाएगा और ऊपर कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा. So if you turn it up na, like this, it is in the diluted position. If you turn it down like this, it's providing you 100% oxygen. We'll go into that in a little bit detail. At any given point of time, if you need 100% oxygen at positive pressure, देखो तीन हमारे पास basic fund है, ठीक है? We have three ways or three particular settings in which oxygen is provided to you. Okay, what are the three settings? The first setting is N, the second setting is 100, and the third setting is E1. What is the difference? Normal you have diluted oxygen on demand. 100% अगर आप इसको कर दोगे तो it is 100% oxygen, it's pure oxygen on demand. Emergency अगर करोगे तो 100% oxygen at positive pressure. Clear? कोई डाउट? अब इन सारे मोड्स में स्विच कैसे करते हैं ये भी दिखाऊंगा. बिफोर में आई टेल यू दिस, आप जब ये मास्क को ऐसे ऐसे करते हो, टेस्ट करते हो, तो ये ऊपर की तरफ रहता है. हाउएवर जब आप इस मास्क को एक्चुअली डाउन करोगे, कभी देखा ये रेगुलेटर होता कहाँ है? सामने, साइड में या नीचे, इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल और बटन नीचे की तरफ. बटन नीचे की तरफ होते हैं. सो नाउ आपको इमरजेंसी वाले नॉब को घुमाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे करना पड़ेगा. हाउ डू यू टर्न दिस नॉब टू द इमरजेंसी नॉब? सो बेसिकली एज यू कैन सी, ये जो आपको व्हाइट डॉट है, ये व्हाइट डॉट यहाँ से यहाँ पे है तो नॉर्मल है. अगर इधर कर दोगे तो वो इमरजेंसी में हो जाएगा. इट इज सप्लाइंग यू पॉजिटिव प्रेशर पे 100% ऑक्सीजन. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जब तुम इस मास्क को ऐसे पहनोगे, ये बटन तो नीचे की तरफ आ गया, अब किस साइड घुमाओगे? उल्टा. ऐसे घुमाओगे, ऐसे. ये मेरा राइट हैंड है. ट्राई करना, हाँ, बिकॉज जब एक्चुअली जरूरत पड़ेगी ना तो ये पता होना चाहिए. ये चीज ट्राई नहीं करवाते, पता होना चाहिए. ओके, सो व्हेन यू टर्न दिस ऑन इमरजेंसी, अब अच्छा, दिस इज नॉट ओनली अ नॉब. हाँ, दिस इज नॉट ओनली अ नॉब. ये नॉब के साथ साथ इसके अंदर एक बीच में बटन भी है. अगर आप वो बटन प्रेस करोगे तो वो टेम्पररी ऐसे 2-3 सेकंड के लिए देगा पॉजिटिव प्रेशर. इससे क्या होगा, अगर अंदर स्मोक भर गया, धुंध भर गई है, करो,
जिन जिन लोगों ने स्कूबा डाइविंग की है उसमें भी यही सिस्टम होता है, पूरा डिफॉग कर देते हैं। अगर मास्क के अंदर से पानी निकालना है क्या करते हैं, मास्क के अंदर हवा डाल दो, यही करते थे स्कूबा डाइविंग में भी, राइट? सो व्हेन यू प्रेस दैट बटन, it generates positive pressure temporarily. This helps you defog the glass, remove smokes, ashes from entering the mask. However, if there is persistent smoke, persistent ashes, or if you're feeling dizzy, you can turn it to emergency. Permanent on pressure. Permanent over pressure आपको दिया जाएगा। अच्छा, by the way, ये जो regulator है, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि अगर तुमने इसको 100% किया हुआ है ना, जैसे ही तुम्हारा कैबिन ऑल्टीट्यूड एक्चुअली 30,000 फीट के ऊपर भी होगा ना, वो पॉजिटिव डिमांड ही देगा, इमरजेंसी ही देगा। लेकिन ये इमरजेंसी तभी अवेलेबल है जब तुमने एन को 100 किया। सो हाउ डू यू सिलेक्ट इमरजेंसी? यू हैव टू फर्स्ट टर्न इट ऑन टू 100, प्रेस टू 100 बेसिकली। अगर तुमको देखो, इसीलिए कहा जाता है हमेशा उसको 100 पे रखो। जब तुम मास्क उठा के पहनोगे, याद रखना, अगर तुमने अपना प्रिलिमिनरी कॉकपिट प्रिपरेशन और कॉकपिट प्रिपरेशन सही से किया और ऑक्सीजन मास्क टेस्ट सही से किया है, तो वो 100% में दबावा होगा। अगर तुमको उसको डाइल्यूट करना है तो तुमको उसको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ऐसे, वो फ्लैप को ऐसे करना पड़ेगा। गॉट इट? नाउ लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर बटन। ये उसके दो पोजीशंस है, पुश्ड इन, पुल्ड आउट। When the push button switch is pressed in 100% push position, the masks provide 100% oxygen, which is on but on demand. However, जब तुमने उसको pull out किया हुआ है, when the push button switch is released, end position, the mask provides a mixture of ambient air and the oxygen. So, in your emergency descent QRH checklist, crew oxygen masks dilution consider. क्या करते हो? ये चीज करते हो। हम लोग तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर, जल्दी खत्म करो, ये काम खत्म करो। No, but this is exactly what you have to do. Why do we do it? So that you actually consume lesser oxygen from the bottles, so that you can use it for a longer period of time. Clear? Quite out. Now, when you come to all these different MSNs, no, the controls and indicators and the oxygen requirements of all different MSNs actually differ by a very, very big amount. The oxygen indications are shown on the door oxy page over here. They are shown on the door oxy page. Please have a look. On the door oxy page, you have cockpit oxy. You have this 900 and this PSI. ये PSI कौन से कलर में आता है बताओ? ECAM में अगर कभी भी आपको कोई भी यूनिट दिखे ना, any unit is blue in color, like this. This is blue in color. Clear? So this cockpit oxy thing, this will be, yeah, this is now divided into two types of aircrafts, CO, NEO. आपको पढ़ना है CO के लिए। अब CO में भी ना दो तीन वेरिएशंस है, मैं आपको दोनों लिखा दे रहा हूँ। क्या है, अगर आपने वैल्यू देखी भी होगी ना तो क्लिक कर जाएगी एग्जाम में। There are a few MSNs which tell you कि यार it will be in green, या तो तुम 600 या 800 से ज्यादा करो। अगर 600 है ना तो pulses in green कब आएगा? 600 से कम में आएगा। एम्बर कब आएगा? 600 का हाफ कर दीजिए, अगर उससे कम हो गया मतलब 300 कर दिया, अगर उससे कम हो गया तो एम्बर में हो जाएगा। क्लियर? कुछ दूसरे एमएसएन भी हैं पुराने वाले जिनमें 800 की रिक्वायरमेंट थी, 800 से ज्यादा ग्रीन, 800 से कम 800 से कम एम्बर, करेक्शन, एडवाइजरी, फ्लैशिंग ग्रीन। एम्बर कब होगा? 800 का आधा कर दो 400। ठीक है, हाफ बॉक्स एम्बर कब कहते हैं? हाफ बॉक्स ऐसा एक एम्बर बॉक्स आता है, ये कब आता है? 1000 और 1500। देख लेना यार, मतलब एग्जाम में कोई भी अगर कॉमन वैल्यू आ जाए तो गुड है। नियो के लिए सेम चीज, ये वैल्यूज है। नियो में ऐसा क्यों है? नियो में वैल्यूज थोड़ी कम क्यों है? बिकॉज इसमें 2 ऑक्सीजन बॉटल्स हैं इंस्टेड ऑफ 1, दैट इज वाई। क्लियर?
पक्का? How do you test the mask? These are the steps. क्या आप ये steps करते हैं? First, you have to check on the crew oxygen supply panel that the crew supply push button switch is at on. तो कोई लाइट दिखती है crew oxygen supply push button के लिए on, या फिर ब्लैंक दिखता है? ब्लैंक दिखता है. फिर आप क्या करोगे? ग्लेयर शीट में आप लाउड स्पीकर को ऑन करोगे. लाउड स्पीकर ऑफ किस में करते हैं? सीवीआर टेस्ट में करते हैं. ऑडियो कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, इंटरनेट रिसेप्शन नॉब को आप आउट करेंगे और एडजस्ट करेंगे. एडजस्ट कितना? मतलब अराउंड आई यूजुअली पुट इट एट 10 o'clock पोजीशन. मेरे को उतना कॉकपिट में नॉइजी नहीं पसंद है. इंटरनेट स्विच को इंट करेंगे. इंटरनेट स्विच को इंट क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रोफोन ऑफ द ऑक्सीजन मास्क. सो int reception knob. Why? Because we want whatever sound is going in the interphone system and whether the sound is going in the interphone system or not. int reception knob out किया. अगर इसमें से आवाज आई मतलब मेरी आवाज जो है इंटरफोन में जा रही है. इंटरनेट स्विच को मैंने इंट में डाला मतलब मैं उसका माइक्रोफोन कनेक्ट कर रहा हूँ. तो उसका माइक्रोफोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं ये उससे चेक हो जाएगा. नाउ आप पहले मास्क चेक करने के लिए आप फ्लैप को खोलेंगे एंड फिर आपको प्रेस एंड होल्ड द टेस्ट रीसेट बटन. प्रेस करना है एंड होल्ड करना है. आप लोग तो फटाक, दो फटाक और एक करके निकाल देते. नहीं, प्रेस एंड होल्ड इट. दबा के रखो नीचे की तरफ. ब्लिंकर येलो में आएगा और फिर आपको ये भी देखना है कि वो बाहर निकल जाए, वो ब्लैक हो जाए. You have to wait until it turns black. Why? I'm giving you two cases. Let's say it does not turn yellow. Then what has happened? That means there is no oxygen supply. Then what is the thing that you must have done? You must have forgotten the crew oxygen supply. Or then you check the oxygen pressure. यही दो चीजें. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपने वो बटन दबाया लेकिन वो येलो ब्लिंकर आया लेकिन गया नहीं. अब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये है कि आपने इमरजेंसी वाला सिलेक्टर को ऑन पे छोड़ दिया, इसीलिए कंटिन्यूस प्रेशर मिल रहा है. तो उसको आप नॉर्मल करो. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है होल्ड द प्रेस रीसेट बटन डाउन एंड प्रेस द इमरजेंसी प्रेशर सिलेक्टर. इसमें द ब्लिंकर हैज टू टर्न ऑन एंड इट हैज टू रिमेन येलो. अब आप क्या करो? बेसिकली आप नाउ यू आर चेकिंग द इमरजेंसी सर्किट. अगर पहले ही वो रिमेन ऑन कर रहा है मतलब इमरजेंसी प्रेशर सिलेक्टर इज सिलेक्टेड ऑन द ऑन पोजीशन. Through both the cases, you have to check for loudspeakers flow. Clear? Lastly, ये वापस ऊपर आ जाना चाहिए बटन. कई बार क्या होता है ये बटन भी जैम हो जाता है. दैट्स व्हाई. लास्टली उसके बाद आपको देखना है कि जो एन और 100% का जो सिलेक्टर है ये 100% पोजीशन मतलब नीचे दबा हुआ है. दैट्स द थर्ड थिंग दैट यू डू. देन व्हाट इज द फोर्थ थिंग दैट यू डू? नाउ यू चेक. Now you only press the emergency pressure selector again कि वो blinker does not turn yellow. This ensures that the mask is not supplied. End में. ठीक है? मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं उसको दबा रहा हूँ तो वो तब भी आ रहा था. तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द प्रेशर रेगुलेटर. लास्टली आपको पांचवी चीज क्या चेक करनी है? चेक दैट द इमरजेंसी प्रेशर सिलेक्टर इज नॉट टर्न्ड राइट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. मतलब ये यहाँ पे राइट की तरफ टर्न हुआ नहीं है. क्लियर? दिस इंश्योर्स दैट ऑक्सीजन परमानेंट ओवर प्रेशर इज नॉट सप्लाइड. आप लोग तीन चीज करते थे या दो चीज करते थे. कितनी चीजें हैं? पांच चीजें. फिर क्या करोगे? क्लोज द लिड. Many people don't close the lid. Okay, that is all about flight crew oxygen. Now let's come to fixed oxygen in the cabin. Go through your FCOM first. Let me know if you have any doubts. Now that you have also checked it from the FCOM,
Go to fixed oxygen system for the cabin. These two are and the portable oxygen system. These two are very fairly simple. And the fixed oxygen system, आप लोगों ने वो cabin crew की announcement सुनी होगी. Cabin में हवा का दबाव कम होने पर आपके सीट के ऊपर से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे. मास्क को पहने, नाक और मुंह ढककर सांस लेते, सामान्य रूप से सांस लेते रहे. दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क पहने. मास्क को इस तरह पहने, अपनी तरफ खींचे. यही होता है. अगर मास्क नीचे नहीं आया क्या करोगे? ये लेना, मुट्ठी फट करके ऊपर मारना, पैनल पे आ जाएगा. ठीक है, जोर से एकदम. Many a times, because these are systems which do not really open often. So कभी कभार जरूरत आने पे करना पड़ जाता है जुगाड़. But how is this oxygen actually generated? Is it stored? No. This is chemically generated oxygen. अगर आपको इसका एक्चुअली कैसे देखना है कि केमिकल ऑक्सीजन जनरेशन कैसे होता है, सोडियम क्लोरेट की मदद से होता है. आई एम राइट. सोडियम क्लोरेट एंड आयरन का एक रिएक्शन होता है जिसकी मदद से फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ट्रिगर इज यू पुलिंग ऑन इट. व्हेन यू पुल ऑन इट, बट फट करके जैसे बुलेट के अंदर सबको नहीं मारते, एंड उससे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है एंड दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. फिर ऑक्सीजन का फ्लो वो छोटी सी बैग में आता है जो मास्क से लगी हुई रहती है एंड फिर वहां से आप ब्रीथ करते हो. ठीक है. One container can supply oxygen to up to 4 masks. So all through the cabin, you're supposed to, अगर आपके number of seats 100 है तो you're supposed to have 110 masks, 10% extra होना चाहिए. You have done these regulations as well, right? You can also expect questions on these lines. So where are these masks fitted? They are fitted in containers actually. And ये containers कहाँ पे? They are located passenger seats के ऊपर, you know it. But they are also located in cabin crew stations and also in the lavatories. Each of the container has an electrical latch mechanism. और वो latch क्या है? Basically वो latch खुल जाएगा और वो मास्क समेत नीचे गिरेगा. ये मास्क लैच खुलने पे गिरता है, बट ये लैच एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड लैच है. एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड लैच है. This can open with on a flight crew command. This can also open if the cabin altitude is more than 14,000 feet or more than 16,000 feet in a few aircrafts. In a few aircrafts. There are a few aircrafts if where you're landing at a very high altitude, then in that case you have an exemption also there. वहाँ पे एक बटन है जिससे आप उसको exempt कर सकते हो. We are going to study about that. इसकी tolerance क्या है? +250 -750. Again, not required for the purpose of exam. अगर पूछ लिया तो मतलब समझ आना गंदा देना तुम्हारा. ठीक है. So masks आ गए, नीचे गिर गए, खींचो. Oxygen generation कब start होगा? When you pull the mask. Now when you're operating on critical terrain routes, for example, when you're flying over Afghanistan, when you're flying over Muscat, then or when you're flying over Leh Ladakh or through the Himalayas, you basically have to make sure that basically हम लोग plan क्या करते हैं, कहीं पे भी depressurization हो ना, हम लोग we can come down to a safe altitude. We have to come down to 10,000 feet or minimum minute altitude, whichever is higher. What if you cannot come down to 10,000 feet? Then you have to plan for an escape route. And you can only send a very few specific aircrafts on those escape routes. So when Go First used to operate to Leh Ladakh routes, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते थे ना वो 22 मिनट्स वाले होते थे. जनरली अब नॉर्मली एयरक्राफ्ट में 15 मिनट की रेगुलेशन है, बट अगर आपको ऐसे रूट्स पे ऑपरेट करना है, ऐसे टेरेन के ऊपर ऑपरेट करना है तो 22 मिनट्स बोलते हैं कि भाई मैं 22 मिनट्स तक ऑक्सीजन मास्क करूँ. 22 मिनट्स. सो पहले मेरे पास 15 मिनट तक का टाइम था 10,000 फीट पे आने के लिए. If I'm giving everyone 22 minutes of oxygen, तो मेरे पास 22 minutes का टाइम है by regulation to come down to 10,000 feet. Clear? Can it be manually released by the crew? Yes. And it's an irreversible action. That is why it is bio marked with a red guarded switch. Clear? कोई doubt?
Any doubts in the FCOM from the FCOM for this? No, right? It has its own automatic function. It has its own automatic function. Sorry, say again. 14,000 feet. Cabin pressure, excess cabin altitude कब आता है? Clear? Cabin altitude की वैल्यू रेड में कब होती है? प्लस माइनस कितना? टॉलरेंस कितनी है? बट गुड, 350 फीट की टॉलरेंस है 0.1 psi. बट गुड that you know it. Good. I'm not expecting you to know that much. Lastly, open FCOM, go to controls and indicators and go to memo display. एक बार वो मेमो डिस्प्ले को रीड कर लीजिए एफकॉम से. ये ई कैम पे मेमो आता है ऑक्सी पैसेंजर्स ऑन. ये जब बेसिकली ना कैबिन ऑल्टीट्यूड एक्सेसिव डिटेक्ट हुआ है तुमने वो गिरा भी दिया मास्क. ठीक है. ग्रीन में कब आएगा? ऑक्सीजन पैसेंजर्स मास्क ऑन कब आता है? जैसे ही तुम्हारे ऑक्सीजन मास्क नीचे फॉल डाउन हो जाएंगे. या तो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो या तो मैन्युअली हुए. अगर तुमने मैन्युअली किए हैं, गुड. मैन्युअली तुम तभी करोगे जब तुम्हारा कैबिन ऑल्टीट्यूड ज्यादा रहेगा 14,000 फीट के ऊपर. तो एक इंडिकेशन एम्बर में है, एक इंडिकेशन ग्रीन में है. दोनों में अंतर क्या है? एक में है सिस्टम को लग रहा है कि भाई ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाले में सिस्टम को लग रहा है कि हाँ एक्सेस कैबिन ऑल्टीट्यूड है और ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं, तो गुड है, ग्रीन है सब कुछ. लेकिन सीपीसी को डिटेक्ट नहीं हुआ एक्सेस कैबिन ऑल्टीट्यूड, लेकिन तब भी मास्क नीचे गिरा है. मतलब कोई तो लोचा है, मतलब किसी ने छेड़खानी की है. सो इट्स नॉट अ नॉर्मल केस. हो सकता है किसी कैबिन क्रू ने निकाल दिया हो या तो किसी बच्चे ने खेलते हुए निकाल दिया हो. कॉकपिट में आ जाएगा इंफॉर्मेशन. क्लियर? Lastly, let's talk about portable oxygen systems. In your FCOMs, it is written as protective breathing equipment. You will be taught and you will have drills when you enter your uh, airline as well, no? You will have drills for these smoke hoods and protective breathing equipment. So it's basically kind of like an AVOX brand होती है, ठीक है? So it's more like a mask that you wear. हम लोग के एयरलाइन में ना वो ग्रे कलर के इसमें सील चेंबर में आता है. And before prior to the flight, you have to check for the serviceability of that particular PBE. बेसिकली अगर पूरा कैबिन में धुआंधार है, कैबिन क्रू आएगी, दस्तक देगी, वो प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट निकाल के बाहर लेके जाएगी. शी विल चेक फॉर द सर्विसिबिलिटी ऑफ इट, ओपन द स्ट्रैप, ओपन द सील, टेक द मास्क आउट. व्हेन शी टेक्स द मास्क आउट, दैट मास्क इज बेसिकली, आप उसको ऊपर पहनोगे वो आपके नेक के अराउंड पूरा सील कर देगा ताकि स्मोक अंदर ना जाए. और ऊपर आपके यहाँ पे पीछे कहीं पे देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. पुराने, सबसे पुराने वाले जो आते थे वहां पे पीछे यहाँ कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर या केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर रहता था. ठीक है. कुछ कुछ में यहाँ सामने भी रहता है. सो देर आर अ नंबर ऑफ मास्क. कुछ कुछ में आप ऐसे जैसे ही ऊपर पहनोगे तो सर के ऊपर टम करके एक बटन बचता था और उससे केमिकल ऑक्सीजन जनरेशन शुरू हो जाता था. कुछ कुछ में जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, यहाँ पे आपको एक टॉगल पुल करना पड़ता है, तब वहां से ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होता है. What it basically is, it's a protective breathing equipment. You wear it, your neck is sealed, nothing can enter inside, nothing can go outside. When you are in the environment where there's lithium ion fire or there is poisonous gases, noxious gases, when you wear it, you can fight fires, you can probably dispose of those things, you can use it when you are entering. तुमने फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया हुआ है, तुमको अभी उसके उस पार जाना है, that's toxic. Halon is toxic. It's not good for your health as well. Okay, so that is about your protective breathing equipment, about 15 minutes of oxygen supply.
it has. Sometimes it also has a microphone and a loudspeaker that will aid in communication. अगर तुम अंदर से कुछ बोलोगे तो वो आपकी आवाज लेके बाहर रेडिएट कर देगा. Okay. Where is this PVE kept? Is it kept in the cockpit? It is kept in the cabin. It can be kept anywhere. It can be kept in both the places. It cannot be kept in the cabin. It can be only kept in the cockpit, and vice versa. It depends from your airline to airline. That is all about oxygen systems. Any doubts? No?